Installing the LOOS boiler international. Now start the connection. LOOS boiler. Water feeder tanks give to boiler. Here is fixing the two pumps. Feeding the water. Boiler connection. X20 is a control wiring. X30 this is X23 this is a main motor, is a firing motor delta. This X93 is control wiring. This is another fuel system wiring, this control wiring. Inshallah yesterday again start the work with control wiring. This is a boiler connection, fuel pump connections, pressure switches, all connected here. This is fuel firing pumps. And downside this indication. Here I have started the motor this. Controller, fuel oil meters, counting the how much use the diesel, and these fuel pipes. This is a X20 is a control, and X23 is a power line, these motors. Inshallah start the boiler after connection completes. Boiler specification. Start the connection. Step number X19 and X91. वन स्टेप पे हमने प्रॉपर कनेक्टर लगा लिए. अभी X90 पे कनेक्टर लगाएंगे. पीछे से केबल को फिक्स करेंगे कैचर के ऊपर. हमारी बॉयलर की कंप्लीट वायरिंग हो गई. पावर के और कंट्रोल के और बर्नर के कनेक्शन वगैरह कर लिए. अभी हमारे कंट्रोल के ये सब अभी हमने X80 केबल कनेक्ट कर दिए. ये हमारे पंप हैं 4 किलोवाट के. इसके ऊपर हम कनेक्ट करेंगे. ये हमारे दो पंप हैं 4 किलोवाट के. ये फीडिंग पंप है. इसके कनेक्शन हमारे रह गए हैं. इंशाल्लाह इसके कनेक्शन 3 फेस हैं ये 4 किलोवाट के. ओके, मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. नई वीडियो तक जरूर कर सके. अल्लाह हाफ़िज़.